Welcome back everyone. Today I am going to start that Louis de Broglie atom and its significance for the quantum model of atom. For the quantum model of atom. So today basically we are going to talk about the Louis de Broglie atom and its significance for quantum model of atom. This you can write that de Broglie model of electron behavior de Broglie model of electron behavior in 1924 was the critical step towards the quantum mechanical model of 1926. De Broglie developed a model that was able to explain the quantum behavior of electron. It was able to explain the quantum behavior of electron. That Niels Bohr described in 1930 in a remarkable application of the applied quanta of Planck's and Einstein several years earlier. Okay, so Niels Bohr had described the quantum behavior, and this de Broglie model of atom was able to explain the quantum behavior of electron. However, Bohr had no explanation for quantized electron.
However, Bohr's had no explanation for quantized electron. He just said that it is quantized, but he had no explanation, which many scientists tried. To understand de Broglie's model, we need to first understand the Bohr's description of electron behavior. And then we can understand that how de Broglie was able to explain how quantum electron could exist which introduce the wave particle duality of particle, that introduce the wave particle duality with mass. So first we need to understand the Bohr's model, then only we can understand the de Broglie's model. According to Bohr, electron orbits the nucleus the orbit radius correlates the electron energy the orbit radius correlates to the electron energy. The larger the radius, the higher the electron energy. The larger the radius, the higher the electron energy. Okay, so
according to him, electrons revolve around the nucleus in a fixed cell having fixed radius and energy. So it was the Bohr's model. Let's take a closer look . Closer look at the orbits. We can see that orbits are at specific distance from the nucleus. And so the electrons have specific energy allowed by any particular orbit. Bohr's explained. Bohr's explained. For an electron, transitioning when the transition is taking place, transitioning from higher to lower energy further orbit to closer. The difference is energy is emitted as light. So in the previous video, students, we had seen that now if you want to make jump one electron from lower orbit to the lower energy orbit to the higher energy orbit, so what will be the amount of energy we will have to supply to that electron? We had seen that. The reverse of that is also possible. Suppose if an electron is coming from higher energy level to the lower energy level, so the way in which it was going from lower to higher energy level, we were supplying the energy. But if it is coming from higher energy level to the lower energy level, so it will emit energy. It will emit energy. Suppose an electron is present here and it is coming here. Okay, it is coming here. So it will radiate energy. It will radiate energy, delta E electron.
and this energy will, higher energy to the lower energy, the difference, note the difference in energy. So whatever will be the difference in energy is emitted as light, is emitted as light. So it will emit light when the electron will come from higher energy level to the lower energy level. It will emit light. It will have photon light energy, photon energy or light energy. When it will come from higher energy level to the lower energy level. So Bose explained it also that for an electron transmitting from higher to lower energy, the difference in energy is emitted as light. Very much important, very much important. So we can say that when an electron is coming from higher energy level to the lower energy level, it will emit energy in the form of light energy. Okay, so Marco, point to remember. Larger or more gap, the transition larger the transition, the higher the photon energy. If the gap will be more, so the energy will be more, photon energy will be more. And photon's energy is equal to, and photon's energy is equal to electrons energy change. You will also remember the electron transition from higher to lower energy, and the difference is equal to the light energy emitted. So whatever will be the difference in energy when an electron is coming from higher energy to the lower energy level, that will be emitted as a light energy. The model of the atom came out, this model of the atom came out which Bose trying to
figure out by various elements. And compounds. Emit very specific frequency of light. Very specific frequency of light. Okay, so this model of atom which came out, in which the Bohrs were trying to figure out the various elements and compound emit very specific frequency of light. So these elements and compounds will emit a very specific frequency of light. What is crucial here is the Bohr's convention that electron can only exist as discrete energy. You can write, I think. What is crucial here? Is the Bohr's convention that electron can only exist in discrete orbit. Electron can only exist at discrete energies. In other words, we can say that electrons are quantized. It can exist at a specific only at specific discrete energy energies and no other energies. किसी और एनर्जी पे ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता. एक सर्टेन फिक्स्ड एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है. You will note one point here. If the electron could exist at any energy, then the entire visible spectrum
नॉट ए स्पेसिफिक कलर। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट में रहते हैं, इसीलिए वो स्पेसिफिक कलर देते हैं। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट कर सकते किसी भी एट एनी एनर्जी, किसी भी एनर्जी पे अगर एग्जिस्ट करते तो हमको पूरा स्पेक्ट्रम विजिबल होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमको एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी मिलती है। If the electron could exist, if the electron could exist at any energy, then light could be generated at any energy due to the electron energy transition acquiring any energy rather than discrete energy which would be observed as an entire rainbow of color rather than discrete individual color। लेकिन तो ऐसा होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो वही बोला है कि इफ इलेक्ट्रॉन कुड एग्जिस्ट एट एनी एनर्जी देन लाइट कुड बी जनरेटेड एट एनी एनर्जी। लाइट किसी भी एनर्जी पे जनरेट कर दी जा सकती थी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी पे एग्जिस्ट करता तो लाइट भी किसी भी एनर्जी पे एमिट हो सकती थी। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांजिशन एक्वायरिंग एन एनर्जी रेदर देन डिस्क्रीट एनर्जी which would be observed as an entire rainbow। तो फिर आप पूरा रेनबो देख सकते हैं। It is so you note down this point। Okay, it does not happen, only these specific colors come out in the electron transition, but we don't observe rainbow। We don't observe rainbow we do observe the color colors so the electron can only transition between some specific orbits
Therefore, electron can only exist to these energies. लेकिन हमको रेनबो तो मिलता नहीं है। लेकिन हम कलर तो ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर सकता है एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में। However, Bohr had no explanation for having the electron could exist like this and what is that called? As quantized state where electron energy is discrete. So Bohr's idea was remarkable application. Idea was remarkable application for Planck's. I will talk about this Planck's and Einstein someday. Okay, but for now, Planck's and Einstein. In 1905, work. उनका भी काम चल रहा था। जब ये थ्योरी आई तो एक रिमार्केबल काम माना जाने लगा। Showing that light energy is quantized. Light energy is quantized, but light has no mass. But light has no mass. However, Bohr was quantizing a particle with mass. उन लोगों के अनुसार लाइट भी क्वांटाइज थी, उसके पास मास नहीं था, लेकिन बोर के पास, ठीक है, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड भी है और उसके पास मास भी है। सो
अब हम बोर के बारे में जान चुके हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी विल लुक एट टू now we can look to de Broglie's model as explanation of Bohr's description. That electron is being quantized. अब हम डी ब्रॉगली का मॉडल देखेंगे जो एक्सप्लेन करेगा बोर के डिस्क्रिप्शन। दैट इज इलेक्ट्रॉन कैन only exist at specific discrete energy. डी ब्रॉगली अब इसको एक्सप्लेन करेगा। सो Bohr's model of orbits was also thought as by de Broglie model of the electron traveling as a wave, electron as a wave travel कर रहा है, ऑर्बिट नहीं है, वेव है। डी ब्रॉगली ने ऐसा बोला कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव्स में ट्रैवल कर रहा है वेव फॉर्म में। यहाँ पे यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या कहा, द इलेक्ट्रॉन कैन only exist as a standing wave. Okay, mark this point. Standing wave at specific discrete energies. इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, स्टैंडिंग वेव की तरीके से। ओके, इट इज अ फिगर ऑफ पाथ ऑफ फोर वेव्स। इट्स अ फिगर ऑफ path of
4 waves. Okay. So electron will exist in a standing wave at specific discrete energy. What is important to understand here? Like what is important to understand about this wave behavior is that electron is in phase with itself. Phase with itself. He said like it. It means it has its own path as it travels around the nucleus. It has its own path. This is called as standing wave. इसने इसको standing wave कहा. This is called as standing wave. Here we have path of 4 waves. Path of 4 waves. What would happen when an electron goes to higher level? Now according to him, what is higher level? According to him, higher level is, let's say, from a path of 4 waves. Let's say from a path of 4 waves to the path of 5 waves. अब जो इलेक्ट्रॉन आप जंप करा रहे थे या फिर लोअर एनर्जी में ले आ रहे थे, जब वो लाइट एमिट कर रहा था, वो यहाँ पे स्टोरी चेंज हो गया. अब वो कह रहा है कि 4 वेव से अगर 5 वेव में चला जाए, ये पाथ ऑफ 4 वेव्स है, अगर ये 5 वेव्स में चला जाए तो क्या होगा? अगर what would happen when an electron goes to higher level, let's say from a path of 4 waves to the path of 5 waves?
अब ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हायर लेवल पे जाना चाहता है, 4 स्टैंडिंग वेव से 5 स्टैंडिंग वेव में जंप करना चाहता है, तब द स्टैंडिंग वेव with 5 waves will have to be increased in size. To accommodate the fifth wave, and so this higher energy path is larger. So this higher energy electron is therefore, so this higher energy electron is therefore farther from the nucleus. From the nucleus. साइज में बड़ा हो गया, तो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो गया, तो न्यूक्लियस से दूर है यानी हायर एनर्जी लेवल पे है. This is what Bohr's had stated with his circular orbit. Model without explanation. यही बोर में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्टेट कर रहा था केवल कि ऐसा होगा. इसका एक्सप्लेनेशन डी ब्रॉगली दे रहा है वेव फॉर्म में. Here the size of the path will have to be increased. Here the size of the path will have to be increased exactly to the point where another wave could fit into it. इतना ऐसे पॉइंट पे बढ़ना चाहिए कि another wave इसमें फिट हो सके. So the electron can only, जब एकदम सर्टेन पॉइंट तक, इस पॉइंट तक उसका साइज इंक्रीज होना है कि बस दूसरी वेव आके उसमें फिट हो पाए.
तो आगे देखिए, सो द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली absorb exact amount of energy. Exact amount of energy that will allow it to move from one standing wave to another. तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि उसको एक सर्टेन पॉइंट तक इंक्रीज करना है साइज में, ताकि एक 5वीं स्टैंडिंग वेव उसमें फिट हो पाए। तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा टू मूव फ्रॉम वन स्टैंडिंग वेव टू दी अनदर। मतलब एक स्टैंडिंग वेव मतलब 4 पाथ से 5th पाथ में जाने के लिए एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा। Let's enlarge the view. Let's enlarge the new standing wave for the sake of clarity. So if the electron gain the exact energy needed to go from a standing wave of 4 waves to 5 waves, it will exist as a standing waves of standing wave of 5 waves. This brings up the question, and the question is, what if it absorbs some amount of energy that is not enough to get it to standing waves, of another level.
अगर इसको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं दी गई कि वो नेक्स्ट स्टैंडिंग वेव में जा पाए, तब क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इन फेज. The electron will not be in phase. उस समय इलेक्ट्रॉन फेज में नहीं होगा. With itself, खुद के साथ फेज में नहीं होगा. It would not stand as a, that is, it would not stand as a standing wave. बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं एग्जिस्ट कर सकता. एग्जैक्ट एनर्जी लेवल होंगे. द इलेक्ट्रॉन will interfere with itself. इलेक्ट्रॉन खुद के साथ इंटरफेयर कर जाएगा एंड could not exist as a path that not in phase a path. वो पाथ रहेगा नहीं, वो उस मतलब वो पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो फेज ही नहीं होगा. वो a path that interfere with itself. एक ऐसा पाथ जो खुद के साथ इंटरफेयर करने लगेगा और वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर आपने एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं दी ना, कुछ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जो कि एनफ नहीं है to get it to the standing wave of another. तो ये क्वेश्चन है गाइस को. तो वो पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो फेज में ही नहीं होगा. इसका आंसर ये है. तो बीच में कोई लेवल नहीं होता है. A very important part of Bohr's model is that Bohr's model is that the right amount of energy is absorbed by the electron it can then go to higher energy orbit. अगर एग्जैक्ट अमाउंट बोर ने कहा था कि एग्जैक्ट अमाउंट एनर्जी दे दिया तो वो अनदर लेवल पे पहुंच जाएगा. सपोज एनर्जी ऑफ रेड लाइट energy of
red light is absorbed by the electron which pushes it to higher energy wave. Now these are the energy waves, and when it will go to the lower energy level, and when it will go to lower energy level, it would radiate रेड लाइट. यानी अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन है इस वेव में है, अनदर वेव में आप भेजना चाह रहे हैं उसको ना, तो वो अगर रेड लाइट की एनर्जी लेके हायर लेवल पे गया है, ओके, ये यहाँ पे आपने ई रेड एनर्जी दी है, इसको ई रेड एनर्जी सप्लाई की है, तो वो हायर लेवल पे गया है. तो अगर वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा तो रेड कलर की एनर्जी को ही एमिट करेगा, यानी रेड कलर एमिट करेगा. कौन सा कलर एमिट करेगा? रेड कलर. अगर उसको आपने रेड कलर की एनर्जी दी है हायर लेवल पे जाने के लिए, तो वो जब हाई लेवल से लो लेवल पे आएगा तो रेड कलर एमिट करेगा. This explains the specific discrete color coming out of energy elements. एलईडी आपने देखा होगा, लाइट एमिटिंग डायोड, कलर एमिट करते हैं वो. तो this explains the specific discrete color coming out of energy elements. For de Broglie, if the right amount of energy is absorbed, if the right amount of energy is absorbed by the electron, it can then go to higher energy state. Of standing wave. एग्जैक्ट अमाउंट देंगे तभी वो अनदर स्टैंडिंग वेव की स्टेट में जा सकेगा. Here the energy of red light of
by the electron which pushes it to higher energy standing wave. एनर्जी ऑफ रेड लाइट आपने दिया तो उसने पुश कर दिया एक नेक्स्ट लेवल पे, एंड व्हेन इट विल गो टू लोअर एनर्जी ऑफ, एंड व्हेन it will go to lower energy of standing wave, it will release रेड लाइट. ओके, अगर इसको आपने रेड लाइट की एनर्जी दे दी तो लोअर से जब हायर लेवल पे जाएगा तो उस हायर लेवल से अगर लो लेवल पे जब वो आएगा तो वो रेड लाइट एमिट करेगा. पॉइंट टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. The electron cannot absorb any other energy. For example, yellow or blue, because किसी और को कलर को वो नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, बस रेड को करते हैं. येलो और ब्लू, बिकॉज दोज कलर्स do not have the energy acquired to get the electron to another standing wave. This explains the discrete color coming out of energies, elements. जो एनर्जीज एलिमेंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर लाइट के ही होते हैं. जनरली आप रेड देखे होंगे. ब्लू कलर की कहानी आई थिंक ही विल टेल यू समडे, ओके, लेटर ऑन, ओके. बट अभी रेड कलर होता है, रेड कलर ही एब्जॉर्ब करते हैं, यही थ्योरी चलाई. रेड कलर एब्जॉर्ब करके ये हाई लेवल पे जाते हैं, और जब लोअर लेवल पे आते हैं तो रेड कलर को ही इमिट करते हैं. और येलो, ब्लू और किसी कलर को ये एब्सॉर्ब कर ही नहीं पाते, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि उसको एक किसी इलेक्ट्रॉन को हायर लेवल पे वो ले जा सके.
ये याद रखिएगा, ये पॉइंट टू रिमेम्बर है। अभी आप ये ध्यान रखिए कि रेड कलर को ही ऑब्जॉर्व कर रहा है और किसी कलर को नहीं। तो बोर सही था। बोर वॉज करेक्ट फॉर हिज रिमार्केबल एप्लीकेशन ऑफ क्वांटाइज्ड लाइट टू क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन। उसका एकदम रिमार्केबल एप्लीकेशन था क्वांटाइज्ड लाइट टू क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन, which was subsequently corrected by डी ब्रॉगली, जिसको डी ब्रॉगली ने करेक्ट किया। और करंट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और जो मेनी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो ये शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूस। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये एक डिस्क्रीट है। द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एग्जिस्ट टू अलाउड एनर्जी। Right? The electron can only exist to allowed energy. So we can say that. So we can say that electron energy is quantized. Electron energy is quantized. So de Broglie succeed. So de Broglie succeeded in describing, you can check the spelling if any spelling is wrong, describing a mechanism in Bohr's hypothesis of electrons only existing around the allowed energies. केवल अलाउड एनर्जीज में ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसका मतलब दिस एक्सप्लेन्स this explains, क्या एक्सप्लेन करता है? वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। वेव पार्टिकल duality of मैटर, यानी मैटर वेव भी है और पार्टिकल भी।